Good evening, everyone. In our previous video, we were studying about the topic genetics. Genetics, it is a branch of biology in which we studied, told you about Mendel, who is Mendel, and on which plant Mendel works and why Mendel chose pea plant for his experiment and what he postulated about the laws of inheritance. Now, in the series of the same, in the continuation, now we study about some terminologies related to the genetics. First, gene. Gene is known as unit of inheritance. Unit of inheritance means gene is the one which carry the information which we inherit from our parents to offspring. Mendel not use the word gene. He used the word factor. The word gene was given by Johnson. Okay. Then the term is allele. Allele is the two contrasting form of a gene. एक ही जीन के दो रूप हो. जैसे अगर हम पीछे की क्लास में जाते हैं तो हमने देखा था कि मेंडल ने प्लांट की हाइट के लिए सिंबल बनाए थे कि टॉलनेस के लिए टी और ड्राफ्ट के लिए स्मॉल टी. तो जीन तो था वो हाइट का. हाइट के जीन के लिए उन्होंने दो फॉर्म बना दिए. तो हम कह सकते हैं एलील इज द टू कॉन्ट्रास्टिंग या more than two contrasting form of a gene. How can I say more than two? That is in the case of blood group. In human we have ABO blood group. Human में हमारे blood group type होता है ABO blood group होता है, which is controlled by three different alleles, which is symbolized as capital I A, capital I B, and its recessive form is symbolized as small I. These three alleles control our blood group. Means the gene for which is responsible for the blood group is consist of three alleles. It is also an example of ABO blood group. Okay, then yes, we are discussing about allele. That allele is two contrasting form of a gene. जैसे प्लांट की हाइट के लिए हमने ले लिया टॉलनेस और ड्राफ्टनेस, ये दो अपोजिट एलील्स हो गए. अगर इसको हम सिंबलाइज करें, अगर इस तरीके से हमारे पास एलील है या फिर इस तरीके से एलील है तो ये सेम हो गए. सेम के लिए हम वर्ड क्या करेंगे? होमोजाइगस. होमोजाइगस कंडीशन. This condition is known as homozygous condition, and if we have allele in the form of this capital T small t, this is known as heterozygous. Hetero because these are different alleles. दोनों identical नहीं है, दोनों different है. Different के लिए heterozygous या hybrid. और if the two alleles are similar, this is known as homozygous. Now, phenotype. Phenotype means जो भी हमें फिजिकली सामने दिख रहा है. भाई अपने क्रॉस करवाया प्लांट्स का, मेंडल ने प्लांट की हाइट को लेके क्रॉस करवाया था. जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स आए थे, इन आवर एक्सपेरिमेंट इन F1 जनरेशन वी फाइंड ऑल आर टॉल प्लांट्स. तो फिजिकली हमें अपीयरेंस देख के जो कैरेक्टर्स दिखते हैं वो कहलाता है फिनोटाइप. वो क्या कहलाता है? फिजिकल अपीयरेंस से जो हमें सामने दिख रहा है एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज नोन एज फिनोटाइप. और जीनोटाइप इज जेनेटिक मेकअप. जेनेटिक मेकअप बोल सकते हैं या जेनेटिक मेकअप ऑफ ए ऑर्गेनिज्म, जिसके बेसिस पे हमें फिनोटाइप शो होता है. विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिनोटाइप एक्सप्रेशन. विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिनोटाइप एक्सप्रेशन.
बहुत अच्छी तरीके से अगर अपन देखें तो हमें एग्जाम्पल से समझ आएगा कि ये अगर कंडीशन है, ठीक है, या फिर सिंपल हम ये कंडीशन लेते हैं, तो ये हमारे क्या है, जीन है। जीन में भी ये दोनों जीन के दो रूप हो गए जिसे हमने एलील कहा है, ठीक है। अब इस जीनोटाइप के कारण हम फिनोटाइप बता सकते हैं कि भाई हम इसे डोमिनेंट रूप मानते हैं, डोमिनेंट फॉर्म मानते हैं, तो हमारा ये फिनोटाइप बनाएगा टॉलनेस का। तो जीनोटाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ फिनोटाइप। दीज आर द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप. Yes, inheritance of one character. Mendel experimented on pea plant when he experimented on taking only one character. This is known as inheritance of one character or monohybrid cross. Yes, he made a cross between pure tall करेक्टर उसने लिया प्लांट की हाइट का, प्लांट हाइट, और प्लांट हाइट में भी उन्होंने जब क्रॉस करवाया तो उन्होंने एक जो प्लांट लिया वो लिया था टॉल एंड इज क्रॉस विद प्योर ड्वार्फ. And the symbols that we use are pure homozygous, capital T. This is homozygous dwarf, small t. These are parents. We can indicate these as parents. Now gametes. जब हम इनके गैमीट्स बनाएंगे तो आप देखेंगे इसका गैमीट क्या बनेगा, कैपिटल टी, और इसका गैमीट बनेगा स्मॉल टी. फिर दिस इज F1 जनरेशन, पीलियल फर्स्ट जनरेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 जनरेशन. फिर ये हमारे पास जीनोटाइप है. जब मेंडल के पास इसके फिनोटाइप आए तो देखिए कि सारे के सारे प्लांट क्या थे, टॉल प्लांट थे. ऑल आर टॉल प्लांट. Then this F1 generation is again allowed to self-pollinate. This F1 generation, this is heterozygous condition, F1 generation. Now in heterozygous condition, we make two types of gamete, two different types of gamete. These are capital T, small t, because gametes are haploid. Then this means that at the time of gamete formation, the two forms of a gene segregate or separate from each other. This is gametes. Now, then these are allowed cross, and when this capital T meet with this small t, capital T small t, again capital T small t, small t, small t, capital T. इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, टॉल. हमारे पास जो जीनोटाइप है कैपिटल टी पर फिनोटाइप आएगा टॉल. इसमें भी जो फिनोटाइप आया वो टॉल का आया, इसमें भी फिनोटाइप आया वो टॉलनेस का ही आया. एंड दिस रिसेसिव इज ड्वार्फ. दिस homozygous condition, small t represent dwarf plant. Okay, then when we see that the phenotype ratio in this case, तो phenotype ratio हम देखेंगे. अभी आपको बताया phenotype होता है appearance या expression of characters. Then we have phenotype is tall, another phenotype is dwarf. Then the ratio is tall ratio is 1:3 and dwarf is 1. Yani we have phenotype ratio is 3:1. 3 are tall and 1 is dwarf. Okay,
Then now, what is the genotype ratio for the same? Is phenotypic ratio is tall is to dwarf is 3 is to 1, and the genotype ratio O is genotype. We have this and this condition and this recessive condition. This ratio 1, these are 2, this is, and the genotype ratio is 1 is to 2 is to 1 for monohybrid cross, and phenotypic ratio is 3 is to 1. Many time in board exam these questions are asked in filling the blanks. In half mark question, this is very important. What is the genotypic ratio of monohybrid cross or inheritance of one character? And what is the phenotypic ratio is 3 is to 1, and genotypic ratio is 1 is to 2 is to 1. We found that in F1 generation we have heterozygous condition. This all are plant, but phenotype was tall. Means according to Mendel, the form or the pair of factor which is able to express itself in F1 generation or in heterozygous condition is known as dominant allele or dominant allele. And if the one which is able to express itself in F2 generation or serial second generation in recessive in homozygous condition, that is this is only able to express itself in the homozygous condition. This is known as recessive allele. मेंडल के अकॉर्डिंग जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाएगा, अपना फिनोटिपिक एक्सप्रेशन दिखाता है, उसे हम बोलते हैं डोमिनेंट. और जो F1 पीढ़ी में अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखा पाता पर F2 पीढ़ी में उसको अपना एक्सप्रेशन या अपना प्रभाव दिखाने का मौका मिलता है, वो भी कब? होमोजाइगस कंडीशन में कैपिटल टी एब्सेंट है तब ये अपना इफेक्ट दिखा रहा है. ये होता है रिसेसिव. जैसे कि अपन एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं. अपने घर में बड़ा भाई होगा, मम्मी पापा बाहर गए, तो बड़ा भाई होगा तो छोटे वाले को अपना रूल नहीं चलाने देगा, अपने अकॉर्डिंग टीवी नहीं देखने देगा, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी गेम्स नहीं खेलने पर जैसे ही बड़ा वाला भाई बाहर चला गया, ये बाहर चला गया, तो ये राजा बन गया. अब यही वाली बात यहाँ, और कैपिटल टी की एब्सेंस में जब स्मॉल टी आए तो ये अपना इफेक्ट दिखा रहा है और ये कहलाएगा पर रिसेसिव, छोटा भाई. ओके. Yes, in F1 generation we crossed about this heterozygous condition. For this C punate given a board representation. This is known as Punate's checkerboard. This is very helpful for dihybrid or trihybrid cross. This is monohybrid cross. We take here. This is symbol of female gametes. This is symbol of male gametes. These are the gametes. Yes, the gametes of capital T small t are capital T small t. These make two gametes. These are the gametes, and similar one here with this. Yes, capital T make this. This is, and this is tallness. This make our cross more convenient to show. से आपको थोड़ा सा इजीली रिप्रेजेंट हो जाता है और दिख जाता है. This is known as Punate's checkerboard, and we easily found here the ratio of tall is to dwarf. Okay, and genotypic ratio is easily found here. Genotypic ratio अभी हमने पढ़ा था 1:2:1 होता है. वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है. बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस. मेंडल ने ये दो स्पेशल क्रॉस भी करवाए थे. व्हाट इज बैक क्रॉस? बैक मतलब रिवर्स जाना. व्हेन वी क्रॉस
F1 individual with the parents. That is, we have F1 individuals and we cross them with the parents. The parents are pure tall or pure dwarf. Okay, that is F1 individual are crossed with pure tall, capital T, or F1 individuals are crossed with recessive dwarf parents. This cross is known as back cross. And test cross is a specialized back cross. When F1 individuals are crossed with recessive parents, this specialized cross is known as test cross. इस क्रॉस को हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. बोर्ड एग्जाम में कई बार इसमें से क्वेश्चन आता है कि टेस्ट क्रॉस क्या है. अभी हम डिटेल में देखते हैं टेस्ट क्रॉस. मेंडल ने F1 जनरेशन स्टार्ट करो. जनरेशन की उसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया. रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया. रिसेसिव पेरेंट यहाँ हम ड्राफ को इसको मान रहे हैं, इसको हम क्रॉस करवा रहे हैं. तो व्हाट इज F1? हमें पता है कि भाई ये F1 इंडिविजुअल है और इसको क्रॉस करा रहे हैं रिसेसिव पेरेंट्स से. इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो ये बनेंगे. इसके जो गैमेट्स, होमोजाइगस का एक ही प्रकार का गैमेट बनता है. हेट्रोजाइगस के अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो दो गैमेट्स बनते हैं. मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताती हूँ गैमेट्स के लिए. गैमेट्स बनाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n. ठीक है, नंबर ऑफ गैमेट्स के लिए. एंड n इज नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस. नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस. भाई हेट्रोजाइगस आपके पास कितने हैं? यहाँ आपके पास हेट्रोजाइगस कितने हैं? एक ही है. देन वैल्यू ऑफ n इज 1 मीन्स 2. यानी नंबर ऑफ गैमेट्स formed will be 2. These are the 2 gametes. Okay. In the case of dihybrid cross, which we study in the later view, that is this condition. Here the number of heterozygous is 1 and 2. And the formula is for gametes. हमें gametes के लिए formula क्या है? 2 की power n. तो नंबर ऑफ गैमेट्स कितने बनेंगे इसमें कंडीशन में? 2 की पावर हेट्रोजाइगस कितने? एक हेट्रोजाइगस, दूसरा हेट्रोजाइगस, 2 की पावर 2. 2 की पावर 2 इज 4. यानी यहाँ हमारे पास 4 गैमेट्स बनेंगे. और आगे गैमेट्स के लिए मैं आपको फोक मेथड भी सिखाऊंगी कि फोक मेथड की हेल्प से हम किस तरीके से इजी वे में गैमेट्स बना सकते हैं. ट्राई हाइब्रिड के लिए यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 3, 8 गैमेट्स होंगे. तो यहाँ पे हम मोनोहाइब्रिड में देखते हैं 2 की पावर 1, तो हमारे पास 2 गैमेट्स आए. नाउ सिंपल, when this is crossed with this and this is crossed with this, means we have tall ratio dwarf. Tall is 50% tall and 50% are dwarf. Means when F1 individual are crossed with recessive parents, we get a result of 50% tall and 50% dwarf variety. And what is the sense, yeah, what is the benefit of making this test cross is to know the genotype of F1. Very very important है ये क्वेश्चंस आता है कि हम टेस्ट क्रॉस क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं. तो द बेनिफिट ऑफ द टेस्ट क्रॉस इज टू नो द जीनोटाइप ऑफ F1 इंडिविजुअल. भाई हमने पी प्लांट पी के सीड लगाए तो हमें ये तो पता चल गया कि पी का सीड के F1 इंडिविजुअल सारे के सारे टॉल आए थे, ये हमें पता लग गया भाई. पर टॉल में ये कंडीशन है या फिर ये कंडीशन है, ये हमें टेस्ट क्रॉस करवाने से ही पता चलेगी. इसलिए मेंडल ने F1 इंडिविजुअल को रिसेसिव के साथ क्रॉस. सो इन द टेस्ट क्रॉस the phenotypic ratio is tall is to dwarf is 1:1 and the genotypic ratio is also
1:1. Okay. Okay. Then the ratio of test cross. Phenotypic and genotypic is same, 1:1, and test cross is used to know the genotypic or genetic makeup of F1 individuals. Okay, when we get the ratio 1:1, then our F1 individual is heterozygous tall. Okay, in this video we studied about the monohybrid cross, that is inheritance of a single character according to Mendel, and checking of F1 individual with the help of test cross. Next video we will study about the dihybrid cross and the laws postulated by the Mendels. Okay, thank you.